Hi everybody, this is Dr. Tufail Chandio. I welcome you all in the class of this prosody and poetry. In our previous class, we talked about uh, what is poetry and what are the common meters we use in poetical composition. We also discussed the rhyme. And in this class, we talked that generally poetry are of two types. Initially, in English literature, there was a poetry what we call non-traditional poetry, where there was no rhyme, no meter. But later on in traditional poetry, we started to use rhyme and a meter. What is a rhyme? That means the words having same sound. And what is a meter? Meter is a process, a technique to control rhythm, and rhythm basically is the ups and down of a sound. ये शायरी में मौसीकी को जन्म देते हैं रिदम, जिसको हम बहर कहते हैं। बहर पानी में जो होते हैं, पानी की लहरें होती हैं, ups and down of a sound that creates basically music in a poetry. So and the way we control this ups and down is called meter. So rhyme is embodied words having same sounds, and what is the appropriate place of rhyme? It can come in the end of the line, or it can come in the internal rhyme. So there are two types of rhyme: internal or end rhyme. If they occur in the end of a line, we call them end rhyme. If they come in the middle of line, we call them internal. And we have three types of rhymes, like a masculine rhyme having one word or one syllable. Okay, when one syllable in two words is matching or having same sound, we call it masculine. Suppose when you say bowl and owl, that will be masculine. You say that sit and hit, that would be masculine. In a feminine, we have a two syllables, and like duty, beauty, this will be in the triplet. We have a three syllables. If they are three syllables are same sound, then this is called a triplet. Okay, here you can see I never saw. This is a poem. I never saw a purple cow by Jelly Burgers. And I never saw a purple cow. I never hope to see one, but I can tell you anyhow, I would rather see than be one. Now, see here in the first line, we have a rhyme word cow, and in the third line, we have word how. So, cow and how, they are going to match, they are going to rhyme. And this would be masculine because there's only one syllable. Ek sound hai, cow, how. The second rhyming scheme is a C1 and a B1. Here you can see that two sounds are similar, E1 and a B1 again E1. Okay, so E1, E1, this is a repetition of the same sound. And this is the second rhyme, that is a feminine because there are two syllables are matching. So in this poem, we have a rhyming scheme like ए बी अगर पहली लाइन को हम ए का नाम दे रहे तो दूसरी बी है, फिर दोबारा ए आ रहा है, फिर बी है. So we would call that rhyming scheme is A B, and there is an internal rhyme as well. Last line के अंदर I would rather C than B one. So C and B, E, C, B. This is masculine rhyme, and again it's going to match. So in this line we have both end rhyme and internal rhyme, and it's going to match with the internal and the last line. So this is how we can say that in this, okay, we have both end and internal rhyme. And rhyming scheme is A B, and the writers have a possible variations like A B, different variations they use. I also talked about that when we discussed this structure. So in a prose, we begin with a letter, and letter make syllable, syllable make words, and words make sentence, and sentence make paragraph, and paragraph make an essay. Okay, on the contrary, poetry, this is again letter. Letter are put together to make syllables, syllables make feet. Feet make a verse, line of poetry, and the verse can have a couplet or a stanza,
and then these couplet and stanzas put together, we have a poem, okay, and this poem is a part of a poetry, okay. So if the stanza has a 2 lines in a poetry, we call it couplet. If it is a 3 line, we call it a triplet. If there are 4 lines, we call it quatrain. If it has a 5 lines, we call it quintet. If it is a 6 line, we call it sextet. If it is 7 lines, we call it septet. If it is 8 line, we call it octave. So that is the general composition of these stanza patterns. Okay, stanza lines of in a poetry, we call them these stanzas. And today we will move forward to discuss today that what type of stanza patterns we are using here. Okay. Now the second important thing we discussed was rhythm. Rhythm is ups and down of a sound. Up and down means the accented or unaccented sound, stays or unstays. Okay. So when we say up, we say unstays. When we say down, I mean accented. Okay. So that would be accented or unaccented or stays or unstays. That would be the case. Okay. So better call it unaccented, unaccented or accented, unstayed or stayed. Okay. Because we have written initially up, so it should be unstayed, and then we have written as down, it should be stayed. Okay. So up and down. Up means unaccented, unstayed, and down means stayed. Okay. So when we put a stayed like that, so way we control this stayed in poetry, we call it a meter. जिस तरीके से इस up and down के sound को हम control करते हैं, उस टेक्निक को हम मीटर कहते हैं. अब हमारे पास अंग्रेजी के अंदर मुख्तलिफ मीटर्स हैं. और पहला मीटर से iambic. The iambic is a meter in which we use stayed, unstayed followed by stayed. Okay. इसमें पहले syllable पे stayed नहीं होता है, दूसरे syllable पे होता है. We call it the iambic. Okay. Unstayed followed by accented or stayed syllables. इस तरीके से अब awake my soul and with the sun. अब देखिए चूंकि जो सिलेबल होते हैं वो मिलकर फीट बनाते हैं. जो iambic होता है उसके एक फुट के अंदर 2 सिलेबल होते हैं. पहला सिलेबल अनस्टेज्ड होता है, दूसरा स्टेज्ड होता है. तो ये 2 सिलेबल मिलकर अनस्टेज्ड स्टेज्ड मिलकर एक फुट बनाएंगे. फिर उसमें जितने फीट होंगे उस हिसाब से हम उसका नाम रखेंगे कि iambic diameter या iambic trimeter or tetrameter or pentameter. उसके मुताबिक हम उसका नाम रखेंगे. सो फिर यहाँ पे देखें awake, awake पहले पे अनस्टेज है, awake, wake पे स्टेज आ जाएगा. Awake my soul and with the sun. अब देखिए up down, up down, up down, up down. This is called iambic, iambic. और अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें है टोटल जो है ना वो 8 सिलेबल है, 4 फीट है. तो हम इसे कहेंगे कि ये इसका मीटर का नाम iambic है. तो हम कहेंगे ये जो लाइन है शायरी की ये लिखी गई है iambic टेट्रामीटर, क्योंकि इसमें 8 सिलेबल हैं जिसे 4 फीट बन रहे हैं. तो ये टेट्रा बन. अगर इसके अंदर 6 सिलेबल होते तो हम इसको रखते iambic ट्राईमीटर्स होते. अगर 4 सिलेबल होते 2 फीट बनते, हम इसका नाम रखते iambic डायमीटर्स. ओके. सो दिस हाउ. एंड ये ट्रोकिक की एग्जांपल है. द ट्रोकिक क्या होता है? ट्रोकिक बिल्कुल अपोजिट है iambic के. iambic में पहला अनस्टेज्ड होता है, दूसरा स्टेज्ड होता है, और ट्रोकिक उसके अपोजिट है. इसमें पहला स्टेज्ड होता है और दूसरा अनस्टेज्ड होता है. अब इसमें देखें कि अनस्टेज्ड फॉलोड बाय अनस्टेज्ड. Comrades, leave me here a little while, as yet it is early morn. अब देखिए इसमें unstaged followed by से comrade, comrade, comrades, comrades, leave me, comrades, leave me here a little while, as yet it is early morn. So unstaged followed by unstaged, that is where is the trochic. और एनापेस्टिक जो होता है इसके अंदर जो है ना एक फुट के अंदर 3 सिलेबल होते हैं. इसमें पहला जो 2 होते हैं वो अनस्टेज्ड होते हैं, उसके बाद एक जो आता है वो स्टेज्ड आता है. तो हम इसे कहते हैं 2 अनस्टेज्ड सिलेबल्स आर फॉलोड बाय 1 स्टेज्ड सिलेबल. अब देखिए एंड द शीन of the space was like stars on the sea. देखिए अनस्टेज्ड, अनस्टेज्ड, स्टेज्ड, अनस्टेज्ड, अनस्टेज्ड, स्टेज्ड. अब इसमें 3 सिलेबल हैं और एक जो. तो अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर टोटल जो
हैं अपना फुट बने, 1 2 3 4 फुट बने, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये है आई द एनापेस्टिक टेट्रामीटर। ये लाइन जो है ना शायरी के आइएम्बिक टेट्रामीटर में लिखी है, क्योंकि इसके अंदर 4 फुट है, तो 4 फुट मिलकर जो है 4 फुट को हम टेट्रामीटर कहते हैं। अगर इसमें जो है ना वो 5 होते तो हम पेंटामीटर कहते हैं। तो ये दिस एनापेस्टिक एग्जाम्पल है। एनापेस्टिक के अंदर 2 अनस्टेज फॉलोड बाय 1 स्टेज। डेक्टेलिक के अंदर डेक्टेलिक एनापेस्टिक के अपोजिट होता है। इसके अंदर वी हैव 1 स्ट्रेस लेवल्स एंड 2 अनस्ट्रेस। अब इसमें देखें कि डाउन अप अप, डाउन अप अप, दैट वुड बी द स्ट्रेटजी। सो स्ट्रेस्ड followed by 2 unstressed. Okay, take hair up tenderly. Now see, here you find that 2 unstressed levels are followed by uh, one stress followed by 2 unstressed. Okay, so this is where you find that variations. Okay, so 1 stress followed by 2 unstressed. This will be down up up, down up up. There is another meter what we call this the amphibaric meter, in which stressed, unstressed, stressed and unstressed. Okay, इसमें भी 3 जो है ना वो सिलेबल होते हैं एक फुट में। पहले पे जो है वो अनस्ट्रेस होता है, और फिर दूसरे पे स्ट्रेस्ड आता है, फिर तीसरा अनस्ट्रेस हो जाता है। तो इसमें ये है कि ओ हश दी, ओ हश दी, माय बेबी, my baby. Okay, अब देखें, ओ अनस्ट्रेस, हश स्ट्रेस, दी अनस्ट्रेस, my अनस्ट्रेस, baby, baby, बे स्ट्रेस, बी अनस्ट्रेस, thy sigh was a night, a night. So here you see that unstressed, stress, stress, unstressed, stress, stress. This is how we use. Okay. The एक स्पॉन्डिक होता है जिसमें दोनों एक्सेंटेड सिलेबल होते हैं, या फेरिक होता है जिसमें दोनों अनएक्सेंटेड सिलेबल होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर फिनोमिना है जो राइटर यूज करते हैं। तो ये जो सिलेबल जो है ना वो मीटर्स होते हैं, जिस तरीके से पोइट्री को कंट्रोल किया जाता है, वी कॉल देम एज ए डिफरेंट मीटर्स है। एंड अब डिपेंड करता है कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन ए सिंगल पोइट इन अ वर्स। अगर वहाँ पे एक जो है ना वो फुट है, तो वी विल कॉल देम मोनोमीटर और डायमीटर। अगर 2 फीट है तो डायमीटर, अगर 3 फीट है तो ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, लाइक दैट, ऑक्टामीटर्स, लाइक दैट। अब देखें, अब हम इसको अगर देखें कि हेवन फ्रॉम ऑल क्रीचर्स हाइज द बुक ऑफ फेथ, ये लाइन एशियन मैन जो है अलेक्जेंडर पोप के ये जर्नल से ली गई है। अब इसको अगर एनालाइज करें तो इसमें है कि हेवन फ्रॉम ऑल क्रीचर्स हाइड्स द बुक ऑफ फेथ। अब इसमें देखें कि अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। अगर टोटल इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर हैं 10 सिलेबल हैं, 5 फीट बने हैं। तो इसका मीटर क्या बना, क्योंकि अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, ये आईएमबिक है। और अगर इसकी हम जो है ना इनको अगर हम रिमूव कर दें तो इसके अंदर जो heaven from all creatures, heaven from all creatures hides the book of fate. Okay, so अगर हम इनको देखें तो this will be like okay, great, unstressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed. Okay, look at this, all three stressed, church heights stressed, the book, the unstressed, book is stressed. Okay, our fate, our is unstressed, fate is stressed. Now see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 level. So we would call it this iambic, iambic pentameters. Okay, because this meter is iambic, there are 10 levels and 5 feet, so we call it as iambic pentameters.
Whose words these are, I think, I know. If you look at this line, okay, whose words these are, I think, I know. Here we have this whose words these are, I think, I know. So look at that. Here we have again how many syllables? Whose words? Anastasia? Whose words these are, I think, I know. Okay. So whose words these are, I think, I know. It may unstates followed by states, unstates, states, unstates, states. So this will be again, here are how many syllable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 syllable and there are 4 feet. So we will call that meters iambic. There are 8 syllables and 4 feet. So we call it as a iambic tetrameter. So okay, this is how we just analyze this poetry, and we see that how this rhythm is being controlled. Okay, so basic difference, as I mentioned in my last class, is prose and poetry is a music, and this music is produced with the help of rhyme, rhythm, and alliteration. They help us to make this thing. So this was the various meters and rhyme scheme what we use in poetry to to analyze or to make it as a poetic. Okay, but today's class we are moving forward to add another component that would be how these stanzas are controlled in a poetic composition. That is very much important. Okay. So the way we control these stanzas in poetry, that is called stanza form. Okay, so all lines in a verse they are put in a certain pattern. We call it as stanza, and the different writers have applied different stanza patterns in their work. So they are named with a certain stanza forms, depending on the lines and the rhyming schemes. There have been very famous and very different stanza forms in English poetry used by different poets like William Wordsworth and other writers. They have used their specific techniques, may it be Chaucer, may it be Spencer's, and those rhymes are also connected with them. Okay. So the first rhyming scheme is a Chaucerian stanza, royal rhyme, okay, rhyme royal. Okay, that was used by Chaucer. Geoffrey Chaucer is the father of English poetry, and he borrowed this from France and called it rhyme royal because it was used by the King James I of Scotland in the 15th century for his well-known poem, The King's Quair. Now, in this stanza, a Chaucerian stanza is based on 7 iambic pentameter lines. Okay, इसके अंदर 7 लाइनें होती हैं और उन 7 लाइनें ये iambic में लिखी जाती है अनस्टेस फॉलोड बाय स्टेस और इसके हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल होते हैं. तो वी कॉल इट iambic pentameters. लेकिन इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ये होती है कि पहली लाइन अगर ए है तो दूसरी बी, ए बी, ए बी, बी सी, सी. इसके 7 लाइनें होंगी और पहली लाइन जो ना वो दूसरी लाइन के साथ मैच करेगी. दूसरी लाइन जो है ना वो सॉरी पहली लाइन तीसरी लाइन के साथ मैच करेगी और दूसरी लाइन चौथी लाइन के साथ मैच करेगी और पांचवी लाइन के साथ भी मैच करेगी और छठी और सातवीं लाइन दोनों आपस में मैच करेंगी. अब देखिए जैसे एग्जांपल ऑफ दिस ओके चाइल्डिश फेयर. इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन खत्म हो रही है डाई, दूसरी लाइन एज एंड आई. अब पहली डाई और आई आपस में एज स्टेज स्टेज. ओके इसमें देखें ये जो ना तीनों आपस में राइम है. तो ए बी बी डाई आई. ठीक है. एज स्टेज स्टेज. ओके ये आपस में राइम है. ए बी बी देन सी सी. कैसे प्राइज लाइज सी सी ये आपस में राइम्ड है. So this is a Chaucerian stanza in which we use these
This is 7 line stanza, and the rhyming pattern is A B A B B C C. Okay. The second rhyming scheme we use, this is Ottawa rhyme. This pattern basically was used by English poets in early 16th century by Sir Thomas Waite, and he frequently went to Italy on these diplomatic missions. And it was from there. Okay, जिस तरह वो फ्रांस से लाया गया था, ये देखिए अंग्रेजी में कहाँ से आ रहा है, इटली से आ रहा है। और ये भी एक, क्योंकि चौसर भी डिप्लोमेट था और उसका दूसरे मुल्कों में आना जाना होता था। सर थॉमस वेट ये भी डिप्लोमेट था और ये चीज़ ये इन्होंने इटली से बारो की थी। और वहाँ से फ्रॉम देयर ही इंट्रोड्यूस्ड दिस स्टेंजा फॉर्म into England. Okay, like the Chaucerian stanza, it has also well suited for narrative purposes. जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो अक्सर इस पैटर्न में यूज की जाती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी जो चौसस ने भी लिखी थी कैंटरबरी टेल्स में जो स्टोरीज थी, उसको ये सूट करता था, तो इसको लिए ये भी जो है ना वो सूट करता है फॉर narrative poetry. Narrative poetry वो होती है जिसमें कहानियां सुनाई जाती हैं, meant to be ballads or epic, etc. It has also been used for satire purposes. Shelley used this for the witch of the Atlas, Keats for the pot of Basil, and the Byron for his very famous poem, the John John. John John. So they also used for this. Okay, so here this is Atharva Rima is a stanza of 8 lines. चौसठ में 7 लाइनें थी, A B B C C, और इसमें 8 लाइनें हैं अथर्वा राइमा के अंदर। एंड इसमें अगेन आइएम्बिक पेंटामीटर्स। ओके, इसमें पहली अनस्टेस और दूसरी अनस्टेस सिलेबल होता है, तो इसमें 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं। ये रिटन आइएम्बिक पेंटामीटर्स। The first rhyme with the third and the fifth, and the second with the fourth and sixth, and the last 2 lines rhyme together. Okay, तो इसकी जो rhyming scheme होती है A B A B A B C C। पहली लाइन दूसरी के साथ, फिर पहले जो है ना वो फर्स्ट जो है ना राइम करेगी तीसरी के साथ, फिर पांचवी के साथ, इस तरह दूसरी राइम करेगी जो चौथी के साथ, इस तरीके से A B A B A B then CC. There will be 8 lines. Okay, देखिए apart, range, smart, mart, exchange, heart, exchange. अब देखिए part, mart, heart, range, exchange, strange. A B A B A B. One done, one done, one done. CC. So A B A B A B C C. This is called Ottawa Rhymer. इसके बाद जो तीसरा मशहूर फेमस जो हमारे पास जो ना राइमिंग स्कीम है, ये स्पेंसर राइमिंग स्कीम कहलाती है. The stanza is so called because it was first used by the poet Spenser in the very famous poem The Fairy Queen. It is a stanza consisting of 8 iambic pentameters. Okay, देखें जिस तरह अचावा राइमा के अंदर भी 8 थी जो सर थॉमस वेट ने इंट्रोड्यूस कराया था. चौसर के स्टेंजा में 7 लाइनें थी, में 8 थी. इसके अंदर भी 8 होती है, लेकिन then lines and an Alexandrian are a line of a 12 syllables at the end. और उसके अंदर जो एक लाइन होती है वो फिर जो है ना वो 12 सिलेबल वाली होती है जिसको अलेक्जेंड्रियन लाइन कहते हैं. तो इसकी जो राइमिंग स्कीम जाकर बनती है ए बी बी सी सी. ये देखें इसमें एक लाइन ज्यादा है, 9 लाइंस का टोटल ये स्टेंजा है जिसमें 8 लाइनें आइएम्बिक पेंटामीटर्स की हैं और एक जो लाइन है वो अलेक्जेंड्रियन है जिसके अंदर 12 सिलेबल है. तो दिस इज टेक्निक what Spencer used in his poetry, and he called and this is not only used by Spencer, but then there are a number of other writers. They also use this for their poetic purpose, and ever poets have frequently used it with more or less success. In the early 18th century, James Thomson used this for his Castle of Indolence. It was used by Byron for his child Harold, and even by Keats in the Eve of St. Agnes, and by the Shelley for the Revolt of Islam, and Adonis, and by Tennyson for the Lotus Eater. So this is very famous stanza pattern, and there will be 9 lines. Chaucer के stanza में 7, अटावा राइमा में 8 और स्पेंसर stanza में टोटल 9 लाइनें. इसमें राइमिंग स्कीम वही है जो अटावा राइमा में थी, ए बी नहीं, लेकिन इसकी राइमिंग स्कीम डिफरेंट है, ए बी बी सी सी. ओके, पहली लाइन दूसरी के साथ और तीसरी लाइन जो है ना वो पहली लाइन तीसरी के साथ और दूसरी लाइन चौथी के साथ.
फिर दोबारा जो है ना वो पैटर्न चेंज होता है, सी बी and C, okay, like that. So this is the techniques what we used. Here is an example of this Spencer stanza. You can see that gone, year, ton, and reappear. So gone and this reappear. Okay, look at this. Okay, gone, year, ton, pair. So year, pair, gone, tone, A, B, then again we have this bear, break, bear, snake. So again, they are going to B, C, okay? And last line is a whack. This is a 9 line, okay? And this last line is called Alexander line, okay? This line is linear as compared to other 8 lines, and this is called Alexander line consisting of 12 syllables. After that, we have a Terza Rima. Terza Rima is an Italian verse. Okay, ये भी Italy से आया था, and it was the first used by great success by Italian poets Dante. और ये मशहूर है कि डांटे ने जो अपनी मशहूर उसकी है द डिवाइन कॉमेडी जो लिखी है उसमें उसने इसको यूज किया था, और फिर ये इंग्लैंड में भी आया। और शेले ने खुसूसन इसके जो ओड है मशहूर वेस्ट टू ओ टू द वेस्ट विंड, उसमें इसने बड़ी कामयाबी के साथ इसको यूज किया। और बायरन ने इसको प्रोफेसी ऑफ जॉन्टे में यूज किया, ब्राउनिंग्स ने इसको स्टैट्यूट एंड द बोस्ट में यूज किया, एंड विलियम मॉरिस ने इसको द डिफेंस ऑफ गेनेवर में यूज किया। सो दिस इज वेरी फेमस राइम। दिस ट्रेजर राइम इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स। इसमें 3 लाइनें होती हैं फॉर्मिंग अ यूनिट। 3 लाइनों का एक स्टेंजा होता है, एंड दिस स्टेंजा फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड एंड द सेकंड लाइन राइम्स विद द फर्स्ट, ओके। So this is where we just use this technique, and if this rhyming scheme goes on and throughout that, okay. So in the third and the second lines rhymed with the first and the third of the following traces, okay. तो वो फिर दूसरी जो है उससे जाकर दूसरा जो ट्रेसेट होता है, ट्रेसेट से मुरादे जो 3 लाइनों का दूसरा स्टेंजा आता है उसके साथ जाकर वो जो है वो मैच करती है। इन दिस वे द ईच ट्रेसेट इज लिंक्ड अप विद द नेक्स्ट, ओके। इसलिए फिर हर उसकी जो है ना दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्टेंजास एक दूसरे में कनेक्ट होते चले जाते हैं। वी कॉल इट द राइमिंग स्कीम ऑफ एनी ट्रेसेट वुड बी ए बी ए। अब देखिए इसकी दूसरी लाइन बी है ना, तो फिर जो नेक्स्ट ट्रेसेट शुरू होगा उसके पहला जो है ना वो होगा वो बी, बी सी बी। तो फिर होगा सी डी सी, तो फिर होगा डी ई डी, फिर होगा ई एफ ई। इस तरीके से जो है ना ये मैच होते चले जाएंगे। वी कॉल देम लाइक दिस, ओके। दिस इज राइम। अब देखिए ये 3 लाइनें बीइंग डेड फीलिंग ए बी ए। अब ये बी है ना, फिर देखिए डेड और ये फिर शुरू हुआ रेड। तो ए बी ए, देन अगेन बी सी बी, रेड बेड, लेकिन दाओ अब दाओ है ना यहाँ से सी, सी डी सी, then this is a C D until fill, okay, D E G। इस तरीके से जो है ना ये they get connected, okay। ये हर 3 लाइन का जो है ना A B A, B C B, फिर C D C, इस तरीके से this goes on, okay। This is a special Terza Rima. This is based comprising 3 line. 3 line is called a tract. Okay, every test set is has got connected with another test set. Okay, so this are in all things are connected, and this very famous written by Shelley is also O to West Wind, in which this has been successfully used. And other stanza is a quatrain. In a quatrain, we use a stanza of 4 iambic pentameters and iambic lines. Okay, this is they are based on 4 lines, and the patterns could be here you see that left, he, right, C, A, B, A, B. So this is a very famous technique based on quatrain. इसमें 4 लाइनें हो सकती हैं, मीटर कोई भी हो सकता है, और उसके राइमिंग स्कीम ए बी या ए बी बी, इस तरह की वेरिएशन के साथ राइटर्स यूज कर सकते हैं। देन वी हैव हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट इसके नाम से जाहिर है कि ये कपल है, ये 2 लाइनों पर मबनी है, और ये जितने भी न्यू क्लासिस्ट राइटर्स थे, चाहे अलेक्जेंडर पोप हो, चाहे ड्राइडन हो या डॉक्टर जॉनसन हो, उन्होंने इसको यूज किया था अक्सर तौर पे, और दे कॉल लेते थे हीरोइक कपलेट। और इसमें तकरीबन जो 5 फीट या 10 syllable होते हैं, and the second syllables of each foot is accented, A B A B A B A B,
this no, sorry stress unstressed followed by stress. So this iambic pentameter जो अक्सर जिसमें ये यूज किया जाता है, और यहाँ पे इसकी मिसाल देखें कि ये आपस में जो है ना वो राइम जो होता है, कपलेट होता है, दो लाइनें होती हैं लेकिन दोनों आपस में राइम्ड होती हैं, जिस तरह ब्रदर अदर, तो दिस इज राइमिंग, दे आर राइम्ड. Okay, this common used in poetry. Different writers they have used it as a heroic couplet, and it has been a famous technique in using. Okay, so different writers have put different varieties of this writing, and we have this octosyllabic couplet. Okay, in the end, mention may also be made to the octosyllabic couplet. It differs from the heroic couplet as in as much as each line in it consists of 8 syllables. Okay, इसमें हर line 8 syllable की होती है, are 4 feet, and not of 10 syllables are 5 feet. Okay, इसमें हम जो है ना वो octosyllabic couplet वो होता है जिसमें आप कभी भी 10 syllable नहीं यूज कर सकते, ये 8 लाइन का होता है, और इसमें जो है ना हम 8 syllable का होता है, और इसमें हम कोई भी वेरिएशंस कर सकते हैं. So these are the common patterns what we used in, especially when you are going to develop these stanza patterns. So in today's class, we talked about the most standard stanza patterns. We begin with this initial Chaucerian stanza based on 7 lines with the rhyming scheme A, B, A, B, B, C, C. Then we talked about the octave rhyme that came from Italy, and there are just rhyming scheme. There are 8 lines A, B, A, B, A, B, C, C. Then there was a expansion stanza. There are 9 lines, and the rhyming scheme is A, B, A, B, B, C, B, C, C. But then expansion stanza, the last line, the ninth line is lengthier. It has 12 syllables. And then you talked about this, the treasure rhyme, very famous, introduced by Dante and applied by different writers, okay, in which they are tested, and every tested is connected by the central line rhyme. Okay, then quatrain, we have a 4 line, and they are connected with A, B, A, B, or A, B, B rhyming scheme. Then heroic couplet, there are only 2 lines, and they are rhymed like brother, other. And then you have this, the last but not the least is octosyllabic couplet, in which you have this 2 lines. They are connected, but again, they are not of 10 syllables, they are 8 syllables, so we call them octosyllabic couplet. These are the most common things what we learn or study in order to analyze a poetical composition. Thank you very much. Take good care of yours, and till we are allowed to meet in the classes, and hope you would learn and enjoy this class. Thank you very much. Take good care of yours.